infection enters in our body. Then food infections and food intoxications are when these kinds of infections add into our food, and when ingest that food, then it make poisonous in our body. And some signs and symptoms are also there when we will go to know about whether we are infected from food poisoning, such as fever will sin, then vomiting, lose motion. तो यही सब जिनस जितेबाला आम जाना कि फूड इन्फेक्शन है फूड किसी इंटॉक्सिकेशन है केमती जाना ना विथ फूड आम खाद्य द्वारा ही से एंटर करवा तो तापर साइंस एंड सिम्पटम्स आर देयर केमिति ना व्हेन द फीवर विल ऑकर्स, when vomiting is occurs, when loose motions, skin diseases, allergics, ये सब जिनस आमर साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ फूड इन्फेक्शंस. Then the episode will include sudden onset of illness, common source of food, simultaneous involvement of many persons, manifestation of some types of complaints by all affected. Then, due to consumption of toxic material in foods and intoxication due to intake of food which contains toxins formed by bacteria. Okay. Food infections occurring due to intake of food containing large number of microorganisms. When the food contains large amount of microorganism and we will take in our food in daily life, then food poisoning is in. Food infections and intoxications. Food infection and food intoxications are the two categories of food poisoning. The questions asibo, what are the categories of food poisoning? Then you have to write one is food infections and another one is food intoxications. Then what do you mean by food poisoning? Food poisoning refers to the harmful effects of consuming food contaminated by microorganisms such as bacteria, viruses, molds and fungus. The food poisoning refers to the harmful effect of consuming food contaminated by microorganisms. When the food is contaminated with microorganisms such as bacteria, virus, fungi, parasites, etc., then we called as food poisoning. We consume contaminated food. Microorganisms are already present in the food. When you consume contaminated food, when the microorganism already present in the food, then the microorganism enter the body, begins to grow and produces the disease. Okay. This is food infection. If the questions will come, what is food infection? You have to write when you consume contaminated, the microorganism enter the body, begins to grow and produces the disease and multiply and produces the disease. This is called food infection. When we consume contaminated food which contains harmful bacteria, harmful microorganisms, okay, and it enters the body, begins to grow and produces disease, is known as food infections. Common diseases infections caused as a result of eating contaminated food include dysentery, cholera, typhoid, infectious hepatitis. On the other hand, consuming food which contains toxic substances produced by the microorganism. So, other hand, if we will look, then consuming food which contain toxic substance, not only microorganism, if the food is mixed with any toxic substances, which contains toxic substances produced by the microorganism. When the microorganism produce any toxic substances and these toxic substances will add in your consuming food, then leads to food intoxication. If the question will come, difference between food infections and food intoxications. Food infection is we consume contaminated food when we eat
contaminated food, it enters in our body and produces the disease. It is known as food infection. Our food intoxication hella consuming food which contain toxic substances produced by microorganism गोटे production करंती toxic माने toxic substances तापरे it leads to food intoxication. One is botulism. It is very important. What is the difference between food infection and food intoxication? Botulism and illness is one example of food intoxications. You have to give one examples of food intoxications is botulism. Botulism is an example of food intoxication. The toxin produced by Clostridium botulinum, a bacteria in food, can cause death. Okay. Then one of the food intoxication name is botulism and illness. It is one example of food intoxication. Okay. से जो टॉक्सिन टा होची तार बैक्टेरिया रो ना हैला क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम botulinum. Okay, a bacteria in food, it can cause death. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା molds, fungus also produce toxin in food. Ergot fungus causes ergotism. Okay, ergot fungus ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ଆମର ergotism ଗୋଟେ disease ଅଛି ସେଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରେ. ତ ଫଙ୍ଗସ୍ ମୋଲ୍ଡସ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଖାଇବା କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଲ୍ଡସ୍. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ'ଣ ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମୋଲ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍ଗସ୍. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଉ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍. ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ମେ ବି କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ due to the ingestion of this food intoxication. Intoxication ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ death ବି ହୁଏ କାରଣ due to the this toxic substances produced by the microorganism. Okay, then तापरे देखिबा हमर हे गला कारण intoxication रे example हला botulism आ गोटे हला कोन कहली molds, fungus, ergot fungus. Okay, then food poisoning कोन सरीगला आमर फूड इन्फेक्शंस कौन फूड इंटॉक्सिकेशंस कौन एटा श्योर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. इट विल कम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड इन्फेक्शंस एंड फूड इंटॉक्सिकेशंस. देन व्हाट इज फूड पॉइजनिंग. फूड इन्फेक्शंस एंड फूड इंटॉक्सिकेशन is therefore of two types. So food infection, food intoxications टा हला two types of. One is bacterial origin, another one is non bacterial origin. माने गोटे गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो गोटे बैक्टीरिया थ्रू रे हमर फूड पॉइजन फूड इन्फेक्शंस हुए बा फूड इंटॉक्सिकेशंस हुए आ गोटे हला नॉन बैक्टीरियल origin. तो देखिबा हमें फूड पॉइजनिंग ऑफ बैक्टीरियल origin सर कोन एटा आथरु गोटे क्वेश्चंस आपनकर 10 मार्क्स रो श्योर आसीबो और शॉर्ट फॉर्म भी आसीबो. नेम ऑफ द इंटॉक्सिकेशंस, name of the microorganism which produce intoxications, name of the microorganism which cause your food infections, etc. You have we have to read it thoroughly. Food poisoning of bacterial origins are Salmonella food poisoning. Okay, how Salmonella bacteria cause food poisoning we will study. Salmonella food poisoning is a very common form of food poisoning. It increases in incidence in recent year in attributed to increase in communal feeding activities like in marriages and large parties, increased popularity of ready to eat food, especially tin food, certain household practices. तो साल्मोनेला बैक्टेरियाटा जो फूड पॉइजनिंग हुए तो सेटा बहुत कॉमन केतेबेले हुए ना जेतेबेले हम ह्यूज अमाउंट रो फूड्स आर प्रिपेयर्ड इन for marriage or any occasions, large parties, ready to eat food जोटा already cooked food है कि हमरो already रखा हुए तो tin रे जो packing food, all these foods contain salmonella. Then what is the causative organism?
The common organism by bacteria belonging to Salmonella species involved in food poisoning are Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium is the microorganism name, but that microorganism will cause food poisoning. Some common bacteria belong to Salmonella. Salmonella को गोटे organism बा bacteria belongs करे सेठु जोटा production हुए जो food poisoning टा सेटा होला Salmonella bacteria. सेटा in food poisoning रे तार ना हे जाए Salmonella typhimurium, Salmonella cholera suis and Salmonella enteritidis. ओके तीन प्रकार Salmonella अच्छी. One is Salmonella typhimurium, Salmonella cholera suis, then Salmonella enteritidis. ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର Salmonella which cause food poisoning. ସେଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିଜ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ମିଟ୍ ଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି तो लार्ज अमाउंट जोटा होता है तो से साल्मोनेला मतलब लॉन्ग टर्म से रखिकी बहुत समय रही जाए आफ्टर 48 आवर्स देन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड एज साल्मोनेला बैक्टीरिया से स्प्रेड हुए और दिस इज द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. Then what is the source of infections? Source of infections कौन? Food gets infected through contaminated meat, milk and milk products, poultry, egg and egg products. Then food get infected through contaminated माने आमर जो मीट रहिला, मिल्क प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, एग एंड एग प्रोडक्ट्स यही सब प्रोडक्ट गुड़ा आमर लार्ज अमाउंट हुए जो पार्टीज रे मैरेज रे है गोटे बड़ फंक्शंस रे तो यही सब नॉनवेज आइटम्स गुड़ा बा मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स जोटा सब आमर हुए तो सेठी आमर साल्मोनेला बैक्टीरिया क्रिएट हुए. Foods can be get infected by rats and mice when the foods gets contaminated by their urine and feces. जितोड़े आमर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स आर फूड प्रोडक्शंस हुए फॉर मैरिज ओकेजन हो कि एनी अदर पार्टीज हो तो सेठी जदि लार्ज अमाउंट्स रे जदि इन्फेक्टेड बाय रैट्स एंड माइस यूरिन एंड फिसेस रैट फिसेस आउ यूरिन जदि ताधरे किछि कंटामिनेशन रे आसीगला देन it will poisonous. Okay, how does the माने साल्मोनेला जोटा हमरो contaminated होची. How does the poisoning occur? Contamination of food may occur at the source or by cross contamination due to excess of organism from the surrounding or their food during process of food. It can also occur due to contamination by a carrier or fecal contamination by food handlers. तो केमिति पॉइजन्सटा अकर माने हुए ना मे बी हमर जो फूड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स रे जदि चाउल डाली ए सब जिनस रे जदि रैट रो बा माइस रो सेमानकर फिशेस हो से मिक्स होइतिबो कि लार्ज अमाउंट राइस हो कि अन्य जमती मिल्क प्रोडक्ट पनीर जोटा कि मुसा ता भीतर भी किछि जदि कंटामिनेटेड हे गला इन केस बा हैंड रु जदि कंटामिनेशन सला और फिकल कंटेम फूड हैंडलर्स माने जो माने हैंडलर्स से मानक थ्रू रे जदि कंटामिनेशन हला तो सेटा food poisoning है जाए. The contaminate organism or ingestion multiply in intestine and give sudden rise to diarrhea and vomiting or poo. सेटा जितने हमारा when we will consume that contaminated food then it will multiply in our intestine and give rise to sudden onset of diarrhea, vomiting. Okay. What are the signs and symptoms of salmonellosis? Salmonellosis. The onset of the episode is usually sudden, accompanied by chilled fever, nausea, vomiting, and profuse watery diarrhea lasts for 2 to 3 days. जदि salmonellosis infections गोटे persons को ହେଲା, then what are the signs and symptoms? Then first of all the fever will rise, then with rigor fevers, then nausea, vomitings, and watery diarrhea is seen lasting for 2 to 3 days. Or when we will left it for untreated, then death is reported to occur
in about 1% of the cases. 1% of the cases रे जदि untreated छाड़ी दबा due to the electrolyte imbalance, due to the dehydration, the death may be seen in some cases. Who are susceptible? को मानकु आमे देखिबा generally all are susceptible. Debilitating conditions increase the susceptibility. What is the incubation period? Incubation period hella 12 to 24 hours after consumption of that contaminated food, then the signs and symptoms will rise. तो साइन सिम्पटम्स केतबेले हुए 12 ରୁ 24 घंटा भितर जितले कंटामिनेटेड फूड आमे खाऊ तो तापर सेटा स्टार्ट हुए तार साइंस एंड सिम्पटम्स देखा जाए. What is the period of communicability? The periods of communicability extends throughout the course of the disease. Undetected carriers are also known. Okay. Then after salmonellosis, okay, when the question will come, write about the bacteria of salmonellosis. Then you have to write how the salmonellosis types of salmonella, or how the infection sources of salmonellosis. You have to write the contaminated meat, milk products, eggs products, poultry forms, and when infected by rat or mice, feces and urine. सेटा हेले हमरो salmonella micro bacteria will contaminated in our food. Then or it will the carrier by the food handlers, or the contamination in raw form. कंचा अवस्था रे जेतेबेले सेतरे किछि माइस और रैट्स रो पीसेस आउ यूरिन जति मिक्स अप हे जाउछि, then it will multiply in our intestine and vomiting, loose motions are seen. You have to write this. Incubation period is 12 to 24 hours. Next, staphylococcus food poisoning. What is staphylococcus? Is another common form of food poisoning due to bacterial origin. It is also one type of bacterial like the salmonellosis. Staphylococcus is another common form of food poisoning due to bacterial origin. This toxin is the poison developed by the bacteria when it grows in food. जेतेबेले food रे grows हुए केमतिया ना हमर जो फिम्पी माडे सेटा हला हमर कोन फंगस. ओके, ता कहंती staphylococcal food poisoning. ओके, then what is the causative organ? केमिति सेटा हमर food poisoning होची ना staphylococcus aureus are the causative organism for staphylococcal food poisoning. When the enterotoxins liberated by these strains contaminates the food item, the toxicity occurs. Optimal temperature for the formation of the enterotoxin by the bacteria is observed to be between 35 degrees centigrade to 37 degrees Celsius. तो जितेबले गोटे टेम्परेचर रे ऑप्टिमल टेम्परेचर गोटे अच्छी 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, the toxin formed are relatively heat stable and resist boiling up to 30 minutes. तो एटा केमती हुए ना हमरो जितेबले when it is contaminated with or contaminated केमती हुए ना फूड जितेबले बहुत समय रहे in this temperature 35 degree Celsius to 37 degree Celsius रे सेती बोले सही Staphylococcus bacteria टा formed हुए. Okay, the toxin formed are relatively heat stable and resist boiling up to 30 minutes. तो यही temperature रे actually Staphylococcus bacteria will grow. Then what is the source of infection? को source से infections का आसे Staphylococci are plentiful in nature. पूरा हम nature रे सेटा बहुत plenty amount रे थाए. They are found on the skin, in the nose and throat of human animals. Human animals को skin रे थाए, throat रे थाए and nose रे थाए. Humans and animals. These are the common organisms causing boils and common skin infections. तो एटा Staphylococcus टा जोटा रहुची तो स्किन इन्फेक्शन क्रिएट कराए. एटा जेमती लूज मोशन कला, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, डायरिया ए सब कला.
तो एटा कौन करियो बॉयल्स एंड कॉमन स्किन इन्फेक्शंस कराए. Other infection of Staphylococcus is milk cattle lead to contamination of milk and milk product causing episodes of food poisoning. तो हमारा milk and milk products रे बहुत जल्दी food poisoning हुए due to the presence of Staphylococcus bacteria. Okay, cooked ham or other meat, chopped or ground food, warmed over food are other sources of infections. गोटे फुड कुक्ड ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ମାନେ 8 hours ଦେନ୍ ତାକୁ ଓଭର କୁକ୍ ବା ଉଷୁମ କରିବା ବା ୱାର୍ମ ଓଭର ଦ ଫୁଡ୍ ସେଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆସେ. କୁକ୍ଡ ହ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟା ମିଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମିଟ୍ସ ଚପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଚପ୍ କରିକି ବା କାଟିକି ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ସେଟା ରଖାଯାଏ ବା ମିଲ୍କ ମିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସରେ ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକସ୍ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ. ତ କମନ୍ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ. ତ ସେଟା ବଏଲ୍ ଆଉ ସ୍କିନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହେ କେଉଁଠି ନା ନୋଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସରେ ଥାଏ. Then what is the reservoir of infections? The reservoir hala the source of the organism is a food handler who might be suffering from nose, throat or skin infections. Reservoir माने कहा थ्रू रे एटा माने स्प्रेड होची ना जो मानकर स्किन इन्फेक्शंस थ्रोट इन्फेक्शंस आर देयर and also discharge watery discharge from nose boils thibo pimples thibo etc. Another source is a milk of a cow with other infections. तार जदि काउर जदि तार किछि इन्फेक्शंस रहिला अदर इन्फेक्शन रहिला then also staphylococcus bacteria will grow. Then what grow माने contaminated with food. If you store food preparation which are thus infected for several hours, room temperature, the bacteria multiply and produce toxin which cause the food poisoning. ता माने हमर गोटे स्पेसिफिक टाइमिंग अच्छी आम 4 to 8 hours ही फुडटा को सेफली स्टोर करके रखिपर ताठू अधिक आवर्स हेले कुक्ड फुड जो मॉइस्चर थाए आ रूम टेम्परेचर रे जो आम रखा द बैक्टेरिया विल मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूसेस टॉक्सिन व्हिच कॉज द पॉइजनिंग है जमी कहते बासी हो गला खराब हो गला तार स्मेल आसला जिते फुड्र नाइस स्मेल रु बैड ऑर्डर विल कम्स आउट देन इट इज नोन एज फूड पॉइजनिंग. What is the mode of transmission? The mode of transmission is consumption of contaminated food products like pastries, custard, salads, sandwiches, sliced meat, meat products. Through contamination हुए Staphylococcus. Then contamination occur from the purulent discharge from the infected fingers, infected eyes, abscesses, nasal secretions. Normal skins of food and handlers come in contact with food item. जो माने को सब ए सब जिनस थाए माने हाथ इन्फेक्शन थाए हैंड फिंगर्स रो इन्फेक्टेड आईज थाए एब्सेस थाए नाजल सिक्रेशंस थाए नॉर्मल स्किन ऑफ फूड हैंडलर्स कमिंग इन कांटेक्ट विथ तापर नॉर्मल फूड हैंडलर रो कमिंग कांटेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट जदि हैला गोटे अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दियर पर्सन को से हैला कैरियर where the bacteria multiply when allowed to stand for several hours for serving. These bacteria liberate and cause outbreak of food poisoning. तो ये सब जिनस को जिनस जोटा कट खोलारे काटिकी जोटा कटा जिनस रही थाए सलाड्स आइटम हो कि मिल्क आइटम रे कस्टार्ड हो खीर हो पेस्ट्रीज ओपनली सलाड्स कट होगी रही है तो सैंडविचेस रे जो स्लाइस ऑफ चीज स्लाइसेस दिया होची स्लाइस मिक्स दिया होची मिक्स प्रोडक्ट तो ये बहुत समय एक्सपोज हेले बा जो माने कंटामिनेटेड पर्सन्स रो कांटेक्ट रे आसिले इट विल अफेक्टेड. How the poisonous occur? Food poisoning occurs because of the toxin liberated by the organism growing in the contaminated food. Toxin in heat resistance, it can remain in the food and cause harm even after the actual organism have died. The effect of poisoning is due to the action of toxin on the gut and nervous system. What are the signs and symptoms? The illness in Staphylococcus poisoning is sudden and unusual, manifest by onset of vomiting. तार सेमती साइन एंड सिम्पटम्स आर है सेमती
कि लूज मोशन हवा एनी फूड पॉइजनिंग द साइन एंड सिम्पटम इज simply vomiting, abdominal cramps, loose motions, etc. When the disease is severe, blood and mucus may appear in the stool. One does not get fever and can recover in 1 or 3 days. ଏଥିରେ ସବୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂରେ ସେଟା ସାଲମୋନାଲିସିସ୍ ହଉ କି ଆମର स्टाइफोलोकोकस बैक्टेरिया हो तो मेन जेतेबेले से व्हेन वी विल कंज्यूम दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया दिस काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिक बैक्टीरियाज when you consume through foods then the some of the sign symptoms are there. It will multiply in our intestine so that the loose motions vomitings are occurs. Incubation period is short 1 to 6 hours भितरे infections हो जाए. Next is botulism. Then what is botulism? Botulism is a very serious form of food poisoning, very serious form of food poisoning, but unfortunately its occurrence is rare. Botulism infections are very rare, and if it is occur it can kill up to the extent of 2/3 of the victims. जब botulism infections kahaku bhi hela then death will then it can kill up to extent of 2/3 of the victims माने endemic type रो है जीवो. तो what is the causative organism कौन पाई botulism रे तार main organism ना कौन which organism is responsible then Clostridium botulinum है Clostridium botulinum can botulinum okay botulinum can it is the toxin liberated by the organism that cause the food poisoning है सेही organism ना हैला Clostridium botulinum एटा one word आसिले you have to write the causative organism of botulism is Clostridium botulinum. Source of contamination botulism रो कौन ना poisoning is widely distributed in soil and dust. The organism that causes poisoning is widely distributed in soil and dust. Toxin produced by Clostridium botulinum is the toxic agent. Toxins are produced in improperly produced food and on refrigerated foods of low acidity. It is also observed to be present in intestinal tract of domestic animals. The organism enters the food as spores. The foods that are commonly affected by botulism poisoning are home preserved food, pickles, vegetables, homemade cheese, etc. Botulism केमती spread हुए ना when ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି ଛେନା ଚିଜ୍ କର୍ଡ଼ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଚିଜ୍ରେ ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିକଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଚାର ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏନି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ସ ହଉ କି ଏସବୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିକଲ୍ସ ବନେଇଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କୁକ୍ କରିକି ରଖିଲେ ହୋମମେଡ୍ ଚିଜ୍ ବନେଇଲେ ଘରେ ଯେଉଁ ଛେନା କରୁଛନ୍ତି तो से बोटुलिज्म स्प्रेड हबार बहुत चांस थाए केमिति ना टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड फूड धर आप आचार बनइले से प्रिजर्वेशन देलेनी प्रिजर्वेटिव एजेंट्स आर नॉट मिक्स फॉर प्रिजर्वेशन करने कि आमको आम जदि किसी देलेनी देन से बोटुलिज्म माने बैक्टेरिया विल मल्टीप्लाई से बढ़ तापर अन रेफ्रिजरेटर फूड्स कुक कलापर सेमती बाहर सेमती माने रूम टेम्परेचर रे बहुत समय 8 आवर्स पर जो फूड गुड़ा रही निहाती भाव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसबे तो से इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व टू बी प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इंटेस्टिनल ट्रैक रे मध्य थाए आमर बटुल माने क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम organism. The organism enters the food as spores. तापर ये सब जिनस गुड़ा आमर बोटुलिज्म कंटामिनेशंस हुए पिकल्स वेजिटेबल्स होममेड चीज ये सब व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड है 12 to 36 hours. How does the poisoning occur? Once spores of the organism enter the food
Under favorable anaerobic conditions they grow and liberate the toxin. The toxin thus liberated acts on the nervous system. तो सी कहाँ को affect करे? It affects the nervous system. The effect of the toxin on the gastrointestinal systems are minimal. से gastrointestinal को जेमती आमर बटुल आमर जेमती आम साल्मोनेलिसिस पढ़िले स्टैफिलोकोकी जोड़ा पढ़िले से माने सब gastrointestinal system को affect करती. But botulism will affect our nervous system. What is the mode of transmission? Consumption of contaminated food usually consists of inadequately processed canned items such it is without adequate cooking is responsible for the transmission of diseases. Incidence of botulism as a result of contamination from the infected wounds also is known. Infected wounds ଯାହାର ଥିବ food carriers ବା food handlers ମାନଙ୍କର it also cause botulism. Microorganism multiply there. ନହେଲେ properly adequate cooking ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ହେଇନଥିବ ତାର moisture retain ଥିବ ଇଏରେ ଭଲରେ କୁକ୍ଡ ହେଇନଥିବ ତ ସେଇ ସବୁ ଫୁଡ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍. ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ସାଲୋଇଂ ମାନେ ଆମକୁ ଗିଳିବାରେ ମାନେ ଥ୍ରୋଟ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଭଳିଆ ହୁଏ. ବ୍ଲରିଂ ଭିଜନ୍ସ, ଡବଲ୍ ଭିଜନ୍, କ୍ଲୋଜିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଲିଡ୍, painful joints, weakness of the muscles and sometimes even the paralysis of both hands and legs. So जेहेतु nervous system को affect करे botulism, then it will paralysis may be seen due to the muscle weakness and subject is conscious and usually there is no fever aseni. The condition is fatal and death result in 4 to 8 days due to failure of functioning of respiratory or heart or both. Due to the multiple organ failures by the through the Clostridium botulinum microorganism, then maybe organ failure is seen and the death results in 4 to 8 days. Then last is Clostridium perfringens food poisoning. ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ସାଲମୋନେଲାସିସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା botulism. ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର Clostridium perfringens food poisoning. Food poisoning due to Clostridium perfringens is a mild disease of short duration and rarely infertile. तो এটা এতে ক্ষতি করেনি as compared to botulism. Then it is serious conditions, death are known to occur. It is very serious conditions, death are known to occur. What is the causative organism? तार causative organism कौन? এটা ଗୋଟେ mild disease हुए. Some strains of Clostridium perfringens also known as Evelini are the causative agents. Usually the spores contaminate the food. Toxin produced from this organism causes food poisoning. तो सेटा जो Clostridium perfringens ଯେତେବେଳେ food ରେ contaminated हुए and when we will ingest through our mouth ସେତେବେଳେ poisoning हुए. Sources of infections ହେଲା as in the case of botulism, in the case also soil and gastrointestinal tracts of man and animals form the reservoir of infections. तो gastrointestinal tract रे man और animals करो सेही जो माने हमरो Clostridium perfringens microorganisms are reserved there. Meat which has been boiled, steamed or partially roasted allowed to cool several hours and subsequently either reheated is another source of infections. And जेहेतु सेटा human beings हो animals तो intestine रे actually infection टा reservoir है कि थाए. So when we will ingest the meats of the animals, then it should be properly boiled. भलरे cook करिकी नबा कथा because the these poisonous microorganisms are present in the gastrointestinal tracts of animals and human beings.
That's why meat which has been boiled, steamed or partially roasted, allowed to cool several hours and subsequently either reheated is another source of infections. Okay, then first of all you should properly cook the meats before eating. Before eating you will properly cook the meats and it should not be preserved for long times in room temperature. Room temperature ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରଖିବେ ନାହିଁ. How does the poisoning occur? It is the spores which cause the poisoning. It is the natural contaminants of meat. The spores are able to survive the cooking. The favorable temperature for the organism to multiply is between 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. तो ଯେତେବେଳେ 30 डिग्री सेल्सियस बा 50 डिग्री सेल्सियस रे से कुक फूड बा से फूड गुड़ा रहे सेतेबेले द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल मल्टीप्लाई and the spores are able to survive the cooking. Favorable temperature for the multiply hela 30 degree to Celsius to 50 degree Celsius. ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାଫେଲୋକୋକାଲ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯେତେବେଳେ 35 ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସେଇଠି ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ ବା ଗ୍ରୋ करे. What are the signs and symptoms? Sudden onset of colicky abdominal pain followed by diarrhea 8 to 24 hours. 8 to 24 hours with the diarrhea are seen and colic pain by abdominal pain is seen. After consuming contaminated food are the common symptoms. There will be little or no fever. Fever is not the sign and symptoms of any food poisoning. Only vomiting, loose motion, skin rashes are the common signs and symptoms of food poisoning. Nausea and vomiting are rare. Illness lasts usually of a short duration of the day and recovery is rapid. Generally, all are susceptible. Incubation period is 6 to 24 hours with a peak from 10 to 14 hours. Then last one is Bacillus cereus food poisoning. What is Bacillus cereus food poisoning? Is a gastrointestinal disorder occurring due to the contamination of food by the bacillus known as Bacillus cereus. Bacillus cereus gote organism can contaminated with our food. When after ingesting that food, then poisoning will occur. तार congestive organism कौन ना Bacillus cereus. It is the aerobic spore bearing motile rod like bacillus. तो आम जो माइक्रोस्कोप रे ताको ऑब्जर्वेशन रे देखिबा then it look like say rod shape type रो देखा जाए ताको कहंदी bacillus. The organism spores can survive cooking procedures. It produces an enterotoxin which is responsible for causing the food poisoning. The toxin liberated is quite stable. What is the source of infection? Bacillus cereus is the source of infection which is found plentiful in the soil and in raw, dried and processed food. Bacillus cereus is the source of infection which is found plentiful माने बेसी soil रे थाए, raw, dried and processed food रे थाए. Ready to eat food जोड़ा थाए processed food तो से सब थाए जैसे पिज्जा बर्गर जोड़ा माने जोटा कि आम प्रोसेस करके रखी दे था and raw foods, dried foods है ना soil ये सब रे Bacillus cereus का देखा जाए. Then how does the poisoning occur? Consumption of contaminated food in conditions favorable for the multiplication of the bacillus leading to the episode of poisoning. ସେଇଟା ଯେମିତି poison କେମିତି ହୁଏ ନା after consumption of contaminated food, contaminated of bacillus cereus with food, then the multiplication of bacillus lead to the episode of poisoning is seen. What are the signs and symptoms? Two types of symptoms are known to occur during poisoning by bacillus. Bacillus infections ray a sudden onset of nausea, vomiting may occur. First, vomiting will occur. In the second type, abdominal colic followed by diarrhea. In one type, sudden onset of nausea and vomiting is occur. In second type, abdominal colic and diarrhea will occur. Fever usually is not associated with this disease.
These symptoms generally persist only for a short duration. It is coming for short duration, rarely exceeding 24 hours. Death is very rare, but very dangerous bacterial organism, microorganism is botulism. Botulism. Then period of communicability and nature of susceptibility are not yet known. Incubation period is 1 to 24 hours, usually around 6 hours. How is differentiate food poisoning from other gastrointestinal disease? Food poisoning may be differentiated from morbidities like cholera, diarrhea and dysentery or chemical poisoning of the food. The characteristics of the episodes are involvement of a group of people at the same time with a history of sharing a common meal and sudden onset. ମାନେ ସେ କହିଲା food poisoning, gastrointestinal diseases, how it is different from food poisoning. Food poisoning and gastrointestinal disease are not same. Gastrointestinal diseases are causes due to their abnormalities of but due to the bad lifestyles, due to their bad lifestyles and also the enzymatic effects ମାନେ ସେଇଟା ବଡିର ଗୋଟେ due to low immune system, then gastrointestinal disease can occur. But food poisoning re kon hue? Food poisoning re some microorganisms toxic, some microorganisms produce some toxic substances. When we will ingest with food, then when the gastrointestinal symptoms are seen such as vomiting, loose motions, diarrhea, etc., then these are known as food poisoning. माने food poisoning है जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल सब्सटेंसेस जोटा से प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन करती सेटा फूड रे मिसला पर आम खाइला पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्पटम्स जोटा देखा जाए डिसेंट्री डायरिया ये सब तो सेटा है कंप्लीटली फूड पॉइजनिंग बट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस है ड्यू टू द बैड लाइफस्टाइल्स है कि इनहेरेंट माने जमती कि जेनेटिकली एंड ऑल्सो सम एंजाइमेटिक लिवर एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स है ना ये सब जिनस कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज आर डिफरेंट एंड फूड पॉइजनिंग आर डिफरेंट. हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फूड इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन. एबे सब जानिगलु कि आमको कौन को माने फूड इन्फेक्शंस क्रिएट करती एंड को माने फूड इंटॉक्सिकेशंस करती. तो आम तुम केमती कंट्रोल करवा? वेरी सिंपल. फास्ट टू लास्ट जाए आम गोटे जिनस करूँ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पर्सनल सैनिटेशन, हैंड एंड हाइजीन्स है यहाँ नंबर 1. नेक्स्ट है आमर हेल्थ अवेयरनेस, health education or health awareness to the community, to the people who are residing in that area, in that community peoples. We have to educate them, we have to aware them. Hello. Prevention and control of infection from food depends on clean and safe food, free of contamination, handles by clean people in clean premises, with clean utensils, and thorough protections from flies and other insects. Then infection spread by contamination or transfer of the disease causing organism by human hands or insects like flies, rodents, etc. in food to or utensils. Food hygiene and hygiening of the food handlers is a must in preventing or controlling food infections. In fact, that hygiene and cleanliness along with whole food chain right from the stage of production, harvesting, marketing, storage, retailing, processing, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ how we will maintain the hygiene and cleanliness along with whole food chain. What is food chain? Food chain is right from the stage of production, ଯେତେବେଳେ food chain ମାନେ when we will produce the food, production, then harvest करूँ, then marketing, then storage, then retailing, then again processing and serving and eating is essential. Hala, it is known as food chain. When the question will come what is food chain, you have to write the first one is production, then harvesting, then marketing, then store kara storage, then retailing, then processing, then serving, tapre eating is essential.
It is known as food chain. Whole food chain we have to maintain hygiene and cleanliness along with whole food chain you have to write. Then hygiene habits like provision of clean laboratories and opportunities for frequent washing of hands. You have to hand hygiene now. Food handlers should be subjected to frequent and regular health checkup for detection of any infections or carrier state. So first of all is environmental sanitation, then hygiene and cleanliness along with whole food chains. Okay, then third one is you have to hygiene, you have to maintain the hygiene of the laboratories and opportunity. Okay, where the food is processing, जोटी food process होची सेटा clean रखिया दरकार, and regular health checkup or for detection of any infections or carrier states in for the food cook or the food handlers. Almost all disease causing organisms are destroyed by heat. When we will cook it properly at in a suitable temperature, then all organisms are destroyed. Therefore, proper cooking and handling makes the food safe. So you have to write, and fourth point, proper cooking and handling make the food safe. Then the age-old practices of cooking meal every day and eating it hot is the safest measure. Then please advise to take fresh meal or fresh foods in that day. ହେଲା ସେଇ ଦିନରେ ସେଇ fresh food ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ. Then food should not be left in warm places so that the multiplication of disease causing organism occurs. Food କେବେ ବି warm places ରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ. After cooking of foods, then placed in a chilled place, and you should not keep longer time in a room temperature or in a warm place. Room temperature हो कि warm place रे बेसी समय store करके रखिला माने microorganism will be multiply. तापरे toxin production is prevented. Food not eaten immediately should be kept in cold storage so that the bacteria do not multiply. Food not eaten immediately should be kept in when the food will माने जेतेबेले आपण खाई सारला परे the remaining foods will leftover food বা remaining food after eating is completed जेतले खाइबा सरी जाउची जहाँ भी food आसुची रही जाउची then you should store in a refrigerator. In cold storage रे ताकू store कले bacteria will not able to multiply. Okay. One of the favorable conditions for bacterial multiplication and toxin production is temperature of 10 degrees Celsius to 49 degrees Celsius. तो 10 डिग्री सेल्सियस 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे टॉक्सिन जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती. द टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इज bacteriostatic. Bacteria do not grow at this temperature. So we should keep the leftover food. The temperature of 4 degrees Celsius is known as bacteriostatic. The bacteria do not grow at this temperature. Public health laboratories and personnel in the Department of Public Health and municipalities are provided for certain power to prevent and control foodborne diseases. This public health personnel can inspect the places of public eating for hygiene, examine slaughterhouse and meat stalls and cleanliness, and enforce food handlers' hygiene. So, also Department of Public Health laboratories and Department of Public Health and municipalities have certain powers to prevent and control foodborne illnesses. केमती ना they will inspect the places of public eating for hygienic or not. Public places रे जो food सड़ा prepare होचे ready to eat meal तो सेठी जाइकी investigate करिवे whether the cleanliness is maintaining or not. Then such as examine slaughterhouse,
ସେଇଠି ବେଶୀ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଅନ୍ତି। And meat stalls and cleanliness and enforce food handlers hygiene. Food handlers करो hygiene ଆଉ safety ए सब जिनस देखिबा पई public health will inspect that places in 3 days in a week. week रे 3 to 4 days जदि से inspect करंता तेबे ए सब हमर food poisonings were reduced. You should prevent food dysentery, throat infections, carriers of any infections, handling foods. Due to the urbanization phenomenon and time constraint in the life, public ready-to-eat foods are becoming popular. Handling of this food with bare hands should be reduced to a minimum. Proper care should be taken in their packaging and storage. Food premises should be kept free from rats, mice, flies, and dust. Then food where food items are stored or food premises should be kept free from rats, mice, flies, and dust. Milk and milk products should be pasteurized. It should not be keep in raw form. सेटा raw form milk टाको माने न रखिकी it should be pasteurized. A system of continuing surveillance is necessary to avoid outbreak of foodborne diseases. Health education of the community regarding dangers of foodborne illnesses, causes for several outbreaks, and methods to prevent the food contamination are very important in prevention control of foodborne diseases and also in prevention of recurrences of such outbreak. ଯେମିତି କି few words about management of food poisoning. एरा सब point लिखिबे how to prevent or control of food infections by food intoxication. Then how will you manage the food poisoning? केमिति हमें manage करिबा और prevent करिबा food poisoning एटा तो सब points हे गला. The management of the cases of food infections and intoxications depends on the identification of the exact cause of the outbreak. Hence, you should take care to alert the public health authorities about the outbreaks. In severe cases, immediately shift the patients to a nearby hospital till the time of patients are shifted to hospital. You may take care of the dehydration arising due to diarrhea and vomiting by advocating oral ORS solutions. How will you manage after food poisoning? मतलब food poisoning जन हो जाउची आमे before admitting in the hospital आमे कौन केमते मैनेज करिबा ना आर मेन साइन सिम्पटम्स हला dysentery, diarrhea, vomiting, nausea, etc. The electrolyte imbalances are there, then are also dehydration is also there. That's why we will advise to take oral solutions, ORS solutions to the patients. ସେତେବେଳେ ଆମର ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନ ହେବ ଯେମିତି ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ନ ଫଲ୍ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କି ତାର ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଫୋର୍ reaching to the hospital को न पहुँचला जाए we will manage the patients of the food poisoning. आसब जदि लिखिए food poisoning of non bacterial एटा सब bacterial origin है गला non bacterial origin रे केमती food poisoning होचे हमें देखिबा सेटा हला ergotism में कौन देखिदबा सेटा बैक्टेरियल ओरिजिन रो हला एटा नॉन बैक्टेरियल ओरिजिन रो एटा कोन ना फंगस मोल्ड्स फंगस कैन आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग तो फंगस हम समझ देखिथिबे पिंपी खाइबा ऊपर सब पिंपी माडे क्षीर आइटम्स हो दही आइटम्स हो कि एनी फूड आइटम्स बेसी दिन रखला परे गोटे व्हाइटिश टाइप रो मडे नहले तापरे टिके टिके ब्लैकिश ग्रीनिश सब आसे molds and fungus can be caused food poisoning. In addition, there might be certain toxin present naturally in food which may cause food poisoning.
In the section you will learning about non-bacterial origin which occur due to toxic contamination of food item. These are non-bacterial origin. Among the four conditions described, ergotism, aflatoxicosis are due to fungal and mold contamination of food grains respectively. तो ergotism ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା aflatoxicosis जोटा रहिला सेटा दीटा हला ड्यू टू फंगल आउ मोल्ड कंटामिनेशन ऑफ फूड ग्रेन सब जेमती चाउल डाली चूड़ा गहम ए सब रे फूड ग्रेन्स रे सेठू हमरो फंगस इन्फेक्शंस हुए. Litherism, the third condition, is due to toxic principle present in the food items, while epidemic dropsy is due to contamination of edible oil with argemone oil. So, Litherism is the third condition due to toxic principle present in food item. जो खेसरी डाल आम खाई जदि खाऊ तो से लिथेरिज्म हुए. आ गोटे रहिला गोटे एपिडेमिक ड्रप्सी हुए बा आम एसाइटिक टाइप रो माने पेटरे फ्लूइड रिटेंशन हो जाए ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल. ऑयल रे जतबेले कंटामिनेशन होची आर्जिमन ऑयल जोटा आर्जिमन ऑयल को जदि हम एडिबल ऑयल रे मिक्स कर देबे तबे सेटा हमरो हेल्थ कंडीशन रे माने हमरो एब्डोमिनल वाटर रिटेंशन हो जाए बा ड्रप्सीटा हुए. तो आम पढ़ा एर्गोटिज्म. एर्गोटिज्म इज ए कंडीशन अराइजिंग ड्यू टू ए फिल्ड फंगस अफेक्टिंग फूड ग्रेन. तो फंगस जो फूड ग्रेन को जैक बाजरा मस्टार्ड सरगम व्हीट जिते सब मिलेट्स रहिला बा आमर राइस राइस रहिला डाल्स रहिला आउ मिलेट्स रहिला चूड़ा गहम ए सब जिनस जोड़ा सब सीरियल्स प्रोडक्ट्स रहिला से एर्गोटिज्म आमर नॉन बैक्टीरियल ओरिजिन रु आमर क्रिएट हुए. तो द ग्रोथ ऑफ द एर्गोट फंगस अकर्स ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज. देखिए जो फंगस हुए से छतुटा जो आमर मशरूम्सटा होची तो फ्लावरिंग भाया हम. Consumptions of such ergot ingested food grain lead to toxic condition known as ergotism. Sporadic outbreak of ergot poisoning in human beings have been observed from time to time where bajra and rye are consumed at staple food. High yielding varieties of bajra are known to be more prone to ergot infections. बाजरा है बेसी तदरे एर्गोट इन्फेक्शंस बहुत ये हो जाए बाजराटे. तो व्हाट इज द फंगस कॉजिंग एर्गोटिज्म. तो कौ फंगसटा एमती बाजरा हो कि आमर सीरियल्स प्रोडक्ट्स हो कौ फंगस तार कॉजटा कौन ना फंगस दैट कॉजेस एर्गोटिज्म इज आइडेंटिफाई एज क्लाभिसेप्स फुसिफॉर्मिस. क्लाभिसेप्स फुसिफॉर्मिस है गोटे फंगस सेटा आमर सीरियल्स प्रोडक्ट्स रे हुए. द फंगस ग्रोज एज ब्लैकिश मास. देखिए मुझे कहूँ जो फंगस हो जाए धीरे धीरे कला 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 देखा जाए व्हाइट उपरे and seeds become black and irregular which are harvested along with the food grain. The ergot produces toxin that result in ergotism. The signs and symptoms कौन हुए ना symptoms of ergotism are acute but rarely they are fatal है ना. The symptoms nausea हबो बांती लगिबा repeated vomiting हबा drowsiness हालिया हबा lasting over extended periods up to 2 years after ingestion of ergot affect brain. जितेबाला एर्गट एफेक्ट ग्रेन रे जितेबाला एर्गट बा फंगस ग्रोथ होता खाइलार 2 वर्ष भितर यही सब प्रॉब्लम गुड़ा देखा जाए. When the condition become chronic and the patient will complain of painful cramps in limbs, depressions, weakness, convulsions, ये सब जिनस neurological problems will develop. है sometimes blood supply to limbs is affected due to toxic effect of capillary blood vessels which may result in gangrene. तो गैंग्रीन इज ए कंडीशन वेयर बॉडी पार्ट्स बिगिन टू डिस्ट्रॉय ड्यू टू इन्फेक्शंस. सेटा को ब्लड सर्कुलेशंस हुए नहीं आउ सेटा को इन्फ्लाम्ड हो जाए इन्फेक्शंस हो जाए तो से बॉडी पार्ट्सटा डिस्ट्रॉय हो जाए है ना. तो सेमती हुए जितेबाला एर्गट फंगस ग्रेन सहित आम ताको खाऊ सेतेबाला 2 इयर्स भितर आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर ये सब जिनस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स गैंग्रीन ये सब देखा जाए. तापर गैंग्रीन हेले कौन हुए से बॉडी पार्ट्सटा डिस्ट्रॉय होला परे वी हैव टू कट ऑफ अदरवाइज इट विल स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जितेबाला गोटे ऑर्गन से गैंग्रीन हैला
বা ବହୁତ ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହେଲା ସେ ବଡି ପାର୍ଟସଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ वी हैव टू कट अप दैट organs otherwise it will affected all the organs interlinked to them ଯେମିତି ହାତରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରିନ୍ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ସେଇଠୁ ସତକ ନ କାଟିବା ଦେନ୍ ହୋଲ୍ ହାତ ଦେନ୍ ଚେଷ୍ଟ ଏରିଆ etc will be spread. How to control prevent ergotism? The safe limit of ergot alkaloids toxin in food material is found to be 0.5 mg to 100 gram of the food material. तो ergot alkaloids toxin ताकू कहती food metal found to be ethic in food metal. You should undertake the health education to a communities by making them aware of ergotism and its toxic effects. Teach them the method to removal of ergot seeds from the food grains. Ergot infested grains can be easily removed by floating them in a 20% salt water. केमती ताकू करिबा how to prevent or control ergot seeds ହେଲା ergot seeds माने नॉर्मल बाजरा थिबो नॉर्मल गहम थिबो ता पाखरे टिके ब्लैकिश टाइप रो ହେଲା जेमती ergot प्रोड्यूस ergot जो फंगस प्रोड्यूस गोटे सीड्स थिबो तो ताकू केमती हमें रिमूव करिबा ना when we will easily remove by floating them in 20% of salt water એટલે salt water रे हमें सबु जाक ए जो कौन सेटा सीरियल्स को पके दबा बा गहम नेले तो गहम को पके देला परे एर्गोट एफेक्टेड जोटा माने गहम थिबो तो सेटा ऊपर भासिबो. This can be done by hand picking or air flotation. ହେଲା सेटा एमती करि परिबा एमिति सॉल्ट वाटर रे माने ताकू जदी माने ताकू सोक करि दबा then also floating part is ergot affected cereals तो ताकू बाहर करि परिबा नॉल इट कैन हैंड पिकिंग with air flotation जेन पाछुडंती तो सेमती कले मध्ये ब्लैक टा उडी जिवो ହେଲା तो एई भळा टाइप रो प्रिवेंट करिबा अदरवाइज जदी हमें ताकू बारंबार एर्गट सीड्स खाइबा then it will cause our infections level will high and also neurological problems in also gastrointestinal problems are seen. तापर नेक्स्ट पढ़िबा aflatoxicosis दीटा हम नॉन बैक्टीरियल ओरिजिन रो हुए. Aflatoxis is a condition brought about by aflatoxins which are a group of mycotoxins produced by molds known as Aspergillus flavus and Aspergillus parasitus. दी प्रकार अच्छी Aspergillus flavus गोटे अच्छी Aspergillus parasitus अच्छी. These molds usually contaminate the groundnut seedling. हमरो माटी तळे जोड़ा सब थाए हैला तो सेगडा सब एटा माटी ऊपर रे जते सब शस्य ओडा हैला ताको इफेक्ट करे एटा माटी तळर जो बादाम सब हुए हैला नट्स ओडा सेही सब जिंस को इफेक्ट करे. ग्राउंडनट सीडलिंग जेतेबेले कंटामिनेट द ग्राउंडनट सीडलिंग जेते ग्राउंडनट को जेतेबेले ग्राउंडनटा सीडलिंग हुए बा तार माने कोन सेटा चाराटा उठे तो सही टाइम रे बेसी कंटामिनेट हुए. एफ्लाटॉक्सिन्स आर ए टॉक्सिक टू लिवर से लिवर को माने अफेक्ट करे. एफ्लाटॉक्सिस कैन बी इम्प्लिकेटेड एज ए कॉज ऑफ ह्यूमन हेपाटिक कार्सिनोमा तो लिवर कैंसर रो गोटे कारण हला एफ्लाटॉक्सिन्स हला. It is role in cirrhosis in humans in still under investigation. So baby research chalichi the liver cirrhosis cause of cirrhosis or role of cirrhosis human is still under investigation. These toxins can cause outbreaks of fatal diseases characterized by acute enteritis and hepatitis. The acute gastrointestinal problem or hepatitis are cause of these toxins. In addition to ground seedling, it is now known that the mold can affect other food grains like maize, sorghum, many other human foods like parboiled rice, tapioca, wheat, etc. जेमती सागु गहम ये ए सब को मध्य अफेक्ट करि पारे जदि हमर एफ्लाटॉक्सिन्स कंटेंट जोटा हमर बादाम रो ग्राउंडनट जोटा रहउची ग्राउंडनट सीडलिंग टाइम रे जोटा अफेक्टेड होचे एफ्लाटॉक्सिन टा तो सेटा जदि अदर फूड ग्रेन्स पाखरे रहिला बा संगे रे मिसिला then it also affect these cereals maize sorghum and other human foods like parboiled rice usuna bhat
ଗହମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। Some sample of milk from dairy farms are found to contain aflatoxins. The mold, Aspergillus flavus, grows and contaminated the food grains after favorable condition like harvesting, storing, processing in high humidity. बहुत हाई ह्यूमिडिटी जो प्रोसेसिंग हुए स्टोरिंग टाइम रे तो सही टाइम रे मॉइस्चर एभव 60% एंड टेम्परेचर बिटवीन 11 डिग्री टू 37 डिग्री फेवर टॉक्सिन फॉर्मेशन हुए। तो अफ्लाटॉक्सिन टा 11 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस भितर टॉक्सिन फॉर्मेशन हुए। तो आउ सेटा बहुत जल्दी कंटामिनेशन हुए स्टोरिंग जगार। तो सबूजाक जदि शस्य को आम पाखापाखि स्टोर करवा तो यही कंटामिनेटेड एफ्लाटॉक्सिन टा अलग सीरियल्स को कर तो यहाँ लिभर को प्रॉब्लम करे। हाउ टू कंट्रोल ना आम कंट्रोल केमती करवा ना मेजर्स टू प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिकोसिस विल बी थरो ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्ट फॉलो द प्रॉपर स्टोरेज। तो स्टोरेज रे काले मॉइस्चर रहिले ये सब मोल्ड सड़ा प्रोडक्शन हम बा फिंपी माड़ो देन आम कौन करवा मझे मझे भलरे खरा दबा है। तो प्रॉपर स्टोरेज पूर्व आम ड्राए करवा ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन्स अपन हार्वेस्ट फॉलोइंग बाय प्रॉपर स्टोरेज। स्टोरेज पूर्व भल कर ड्राइड करवा सुखेबा। If the food item is suspected to be contaminated, it must not be allowed for consumption. देखिबा जदि सेटा पूरा ब्लैकिश जेमती हमर मोल्ड आउ ये हला बेले जदि हेइथिबो देन ताकू कंजम्पशन पे स्टोरेज करिबा नाही। नहले अदर ग्रेन्स आर affected from this toxins aflatoxins are affected through these contaminated cereals. लास्ट पढ़ा लिथारिज्म। लिथारिज्म कौन हुए ना लिथारिज्म इज ए कंडीशन अकरिंग ड्यू द कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव ऑफ खेसारी डाल। गोटे पल्स अच्छी खेसारी डाल सेटा जदि लॉन्ग पीरियड जाए जो मैंने खाती तो से लिथारिज्म हुए। इट इज वन टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ पैरालिसिस। देन जेनेरिक नेम ऑफ द पल्स इज लिथाइरस टाभी सैटिवस। लिथाइरस सैटिवस है खेसारी डाल तार जेनेरिक नेम। लिथारिज्म इज मैनिफेस्टेड बाय स्पैक्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। दीटा गोड़र पैरालिसिस हो जाए बा ड्यू टू द लेस और नो ब्लड सर्कुलेशन टू द बोथ limbs. It is due to the toxin beta oxyl amino alanine present in the खेसरीडाल। खेसरीडाल कौन पाई कि लिथारिज्म होची ना ताधर गोटे टॉक्सिक ऑब्जेक्ट सब्सटेंस रोची। इट इज नोन एज बीटा oxalate amino alanine present in खेसरीडाल। That's why it causes litharisms the human body. खेसरीडाल is a hardy crop and drought resistant. This is mostly grown in Madhya Pradesh and Rajasthan, and hence the disease is more common in these parts of the country, where sometimes the खेसरी डाल is consumed as a staple. जो माने कि रेगुलर कंजप्शन करती खेसरी डाल को जो एरिया रे the disease usually occurs in young and active people, crippling them for life, thus making them a social burden to the community. Due to the paralysis, due to the neurological problems, they were unable to walk because both lower limbs are completely paralyzed. When where the peoples are consuming every day the खेसरी डाल or they are consumed as a staple food. तांकर जो staple food हिसाब रे सबुदिन नौथिबे, then due to the this toxins are present in खेसरी डाल, the litharism is occurs in that community. Nothing the advantage in the crops and realizing the difficulty in banning the crop, methods have to be involved to leach out the poison from the dal. तार prevention कौन करिबा जो मानकर एटा staple food जो मानकर सेठी harvest is more तो से माने से food खाइबे। then how to prevent this how to leach out the poison from the dal आमे केमिति ताकू leach out बा remove करिबा से डाल रू। The simple procedure of soaking the dal and then boiling it and steeping for a period of 1 hour leaches out the toxin. First कौन करिबा लीचिंग प्रोसेस करिबा। फर्स्ट दाल को सोक कर दबा
ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଇନ୍ boiling water ରେ ତାକୁ soak କରିବା for 20 to 30 minutes and steeping for a period of 1 hour. uh, we will କ'ଣ କରିବା କେମିତି ତାକୁ ଲିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ନା ଲିଚ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଟକ୍ସିନ୍ କେମିତି କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଏଲିଂ ୱାଟରରେ ତାକୁ soak କରିବା and leave it for 1 hour, then remove discard the water, again we will dry the ତାପରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିଦେବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁକି ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବା ଆଫ୍ଟର ଲିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ you should eat your staple food as ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲ୍। ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲକୁ staple food ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସେମିତି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ଟା ଅଛି ବିଟା ଅକ୍ସାଲିନ୍ ଆମିନୋ ଆଲାନିନ୍ ଯେଉଁ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲିଥାରିଜିମ୍ ବା ବୋଥ୍ ଲୋୟର ଲିମ୍ସର ଆମର ପାରାଲାଇଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆମେ ତ ଯାହାର ଷ୍ଟେପଲ୍ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ତ ମନା କରିହେବନି କାରଣ ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ଅରିଜିନ୍ରେ ସେଇଟା ହେଲା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ମୋର୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ସେଇ ଫୁଡ୍ ହିଁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ। ତ କେମିତି କଲେ ବି ତ ତାଙ୍କ ଲେଥାରିଜିନ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରିଭେନ୍ସନାଲ୍ ମେଥଡ୍ସ ଇଜ୍ after leaching the ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲ୍ then you can ingest it ହେଲା। then this procedure will leave the dal free from toxins। এই procedure ଯଦି ସେମାନେ ନେବେ then dal is free from this kind of toxins। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଜିମନ୍ ଟକ୍ସିସିଟି, ଆଜିମନ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମିଶାଇ ପାରିବା we will add in only in oils। ଅଏଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଆଜିମନ୍ ସିଡ୍ସକୁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜିମନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ସେମ୍ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ଆଜିମନ୍ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆଜିମନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଲୋ କଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା, ଭେରି ଲୋ କଷ୍ଟ, ଆଉ ମଷ୍ଟାର୍ଡଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜିମନ୍ ମାନେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଜାଗାରେ ଆଜିମନ୍କୁ ଅଏଲ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେଟା କହନ୍ତି ଆଜିମନ୍ ଟକ୍ସିସିଟି। ୟୁ ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଲିଥାରିଜିମ୍ ହେଲା ବା ଲୋୟର ଲିମ୍ସ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆଜିମନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସିଡ୍ ବଦଳରେ ଆଜିମନ୍ ଅଏଲ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଇଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫୁଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଏପିଡେମିକ୍ ଡ୍ରପ୍ସି ହେବ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରିଟେନସନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ରିଜନ୍। ତାକୁ କହନ୍ତି ପାଣି ପେଟରେ ପାଣିଟା ରିଟେନ୍ ହେଇକି ରହେ, ଡ୍ରପ୍ସି। ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ନାଓ and epidemic dropsy is a condition characterized by change in the heart and blood vessel। तो से हार्ट ऊपर प्रेशर पड़े ड्यू टू द फ्लूइड accumulated in your abdominal region। तो हार्ट को पड़े प्लस ब्लड वेसल्स। The cause of this dropsy was identified in 1926 to be due to contamination of mustard oil with argemone oil। Instead of mustard oil ଜାଗାରେ तो argemone oil यूज करिକି mustard oil ର लेवल मारिकी जोटा हैला तो सेटा कंजप्शन पर आमर एपिडेमिक ड्रप्सी इज सीन इन लट्स ऑफ पीपल। कारण समस्ते से मस्टर्ड ऑयल खाऊले रेगुलाली, जितेबाला आजिमन टॉक्सिसिटी स्टार्ट है देन पीपल आर फियर टू टेक मस्टर्ड ऑयल और यूज मस्टर्ड ऑयल इन दर कुकिंग। रोसई रे जमा मस्टर्ड ऑयल माने यूज करने को डरले। ओके, व्हाट इज द टॉक्सिन? ए टॉक्सिक अल्कोलॉइड sanguinarine present in argemone oil causes epidemic toxicity। ता धरे आधरे जेमती बीटा ऑक्साइल अमीनो अलिनाइन थिला आधरे सेमती अल्कालॉइड sanguinarine गोटे substances toxic substances present in argemone oil। Then how does the toxicity occur? The toxic present in argemone oil is known to interfere in the carbohydrate metabolism। तो से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रे इंटरफेयर करे। एंड व्हाट इज द साइन एंड सिम्पटम्स जानी थिबे सेथरे कोन हुए स्वेलिंग ऑफ लेग एंड हैंड्स हुए कारण ड्यू टू द फ्लूइड एक्युमुलेट इन आवर एब्डोमेन रे फ्लूइड एक्युमुलेट होबो सेतले लोअर लिम्स आडू सेटा जाए सेति पई बोथ लेग्स वर स्वेल्ड। तापरे रहिला एसोसिएट डायरिया हुए। सम पीपल कंप्लेन ऑफ पेन इन आईज कॉज्ड बाय कंडीशन नोन एज ग्लूकोमा। Pain in eyes also it known as glaucoma which occurs due to raised tension in the eyeballs। Sometimes death may follow which occur due to heart failure due to difficulty in breathing। Why difficulty in breathing and heart failure? Due to the fluid accumulate in the abdomen, over fluid retention। Who are susceptibility of the toxicity? All the persons who consume
The contaminated mustard oil are susceptible for the toxicity. It is not found in breastfed infants as they do not consume oil. So, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗ୍ଲୁକୋମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ, ଦେନ୍ ଆମର ଡାଇରିଆଲ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ହୁଏ, and shortness of breath বা respiratory failure ମଧ୍ୟ ହୁଏ due to ingestions of argemone oil. But how does the contamination occur? କେମିତି contamination occur ହୁଏ? Plant prickly poppy, the plant argemone mexicana जोटा रुहे, तो how to manage epidemic dropsy? ଯେତେବେଳେ ଆମର abdominal water retentions ହୁଏ तो ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା? Then, once the argemone toxicity is suspected, consumption of contaminated oil should be immediately stopped and affected cases should be immediately shifted to a nearby hospital. নহলে କ'ଣ ହେବ ନା ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ହେବ, নহଲେ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଓଭରଫ୍ଲୁଇଡ୍ retention in our stomach area. Then, is there any method available to detect argemone contamination in edible oil? Yes, ଏଇଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେମିତି DNHE କରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍, ସେମିତି MSc ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ଅଛି, MSc ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, MSc ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, food quality and safety management, okay, MSc in food and quality and safety management रे ए सबु हमर जो contaminations बा contaminated बा adulterations जोटा adulterate हुए food रे अलगा किसी टॉक्सिक मटेरियल मिसे बा सेम जेमती देखा जिबा जिंसो को मिक्स करा जाए जोटा कि टॉक्सिक इन नेचर थाए बा जोटा रे न्यूट्रिएंट्स किछि न थाए तो जोटा मिसा जाए ता कोनते adulterations. How will you determine the adulterate food in a common food केमती होउची तो सही लैब रे देखा जाए आपण मन गतेटा नाही तो how is there any method available to detect argemone contamination in edible oil? Yes, ଆମର argemone oil को contamination रे आमे जते बेले तादरे तादरे रहउची जेमती कि ऑरेंज कलर एंड acrid order जोटा थाए there is a chemical test available to detect the contaminations अच्छी. It is known as nitric acid test. Nitric acid test ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା whether the oil is contaminated with argemone oil or not. It is a simple test which also can be undertaken. The test involves addition to nitric acid to the suspected sample of oil in a test tube. You will take 5 ml of oil, mustard oil in a test tube and spread it well, माने बहुत भलरे सेक it well, भलरे सेक कर देबे हैला. तापरे you should drop out the nitric acid 2 to 3 drops of nitric acid add करिवे आउ ताकू पुणी अगेन सेक करिवे ताकू रखि देबे हैला. रखि देला परे on seeking the tube, development of the brown color or orange red color indicates the presence of argemone oil. माने तार कलर जिते बळे आपण ऑयलटा नै थिबे सेकिंग परे रखि देबे ता कलर जदि पूरा डीप ब्राउन थिबो बा ता कलर जहा भी थिबो आफ्टर एडिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड सेथरे कोन हबो ना पूरा ऑरेंज रेड कलर रा आसीबो बा ब्राउन कलर रा आसीबो तार कलर पूरा ऑलरेडी चेंज हबो तेबे जानिबे द टेस्ट विल बी पॉजिटिव ओनली द कंटामिनेशन इज द एक्सटेंड टू 0 to 25% और मोर केते कलरेशन आसुची तबे जानिबे तादरे मस्टर्ड सीड रो भाग केते कम अछि आर्जेमोन रो केते अधिका अछि निजे निजे करि परिबे बट एटा फूड लैब रे बा हमर लैब रे ही एटा टेस्ट करि हबो. Equipment usually available in big laboratories. It is known as paper chromatography test. तो पेपर क्रोमाटोग्राफी टेस्ट रे भी आमे तेरा डिप कले भी कलर देखेले भी जना पड़ जाए तादरे आर्जेमोन ऑयल किंतु मस्टर्ड ऑयल आ किछि ऐड करि हबनी एक्सेप्ट आर्जेमोन. आर्जेमोन को ओडिया रे कहते अगीरा तो अगीरा मंजी पूरा मस्टर्ड सोरिष मंजी भलिया देखिया पे केवल मस्टर्ड रे आमे आर्जेमोन ऑयल ही आर्जेमोन सीड्स रो ऑयल ही यूज करि पर आ किछि ऑयल कला माने तार अलगा माने ता स्मेल अलगा आसी जिवो ता कलर अलगा आसी जिवो तो ओनली आमे टेस्ट करी देखिबा आर्जेमोन ऑयल अछि कि नै. आर्जेमोन ऑयल इंजेक्ट माने कंजप्शन करिवा द्वारा हमकु
এই ଟାଇପ୍ର ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟାମିନେସନରେ କେମିତି କରିବା ନା ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସିଡ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ at the field level itself by removal of argemone weeds growing among the oil seeds crop। तो जेहेतु आर्जिमन पूरा आमर आ भाया देखा पूरा सोरिष भाया देखा तो आम कौन करवा हार्वेस्टिंग टाइम रे वी शुड रिमूव द आर्जिमन प्लांट्स आर्जिमन उपाड़ी फोपाड़ा। The deliberate contamination of argemone oil by unscrupulous oil dealers should be dealt by the strict enforcement of the Prevention of PFA Act है प्रिभेन्शन ऑफ फूड एडोलेसेंट एक्ट रे जितेबाला तादरे किसी अपमिश्रण हो नथिबो पूरा प्योर मस्टर्ड ऑयल होइतिबो सेथरे गोटे आमर होलोग्राम रखा जिवो ता कहंती पीएफए है अकॉर्डिंग टू पीएफए एक्ट बा एफएसएसआई मार्क जोटा रहे तो सेटा एफएसएसआई मार्क रे प्रिभेन्शन ऑफ फूड एडोलेसेंट एक्ट अनुसार लगेदेले से आर्जिमन ऑयल कंटामिनेटेड नाई बोली जानिबा है। तापर देखंतु फूड पॉइजनिंग रे बोटुलिज्म साल्मोनेलिसिस है से सब जिनस गुड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन आ को तार सिम्पटम्स एंड साइंस कौन आ को ऑर्गेनिज्म को एफेक्ट करे ये क्वेश्चन श्योर आसीबो है गोटे है बैक्टेरिया प्रोड्यूसिंग फूड पॉइजनिंग है सेटा बोटुलिज्म साल्मोनेलिसिस स्टेप्टोकोकी एडा सब बैक्टेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोटा फूड पॉइजनिंग कराए। आ गोटे है नॉन बैक्टेरियल जोटा कहली आपण को एगोटिज्म है एफ्लोटॉक्सिन एरा सब रहा लिथारिज्म जो होची तार भी वन वर्ड आसीबो अबाउट लिथारिज्म माने खेसरीडाल इंजेक्शन बा कंजप्शन कले लिथारिज्म हुए बा पैरालिसिस हुए। आर्जिमन टॉक्सिसिटी जोटा कहली अगिरा मंजी जोटा कि तेल रे हला परे सेटा हमर ड्रॉप्सी बोली गोटे डिजीज क्रिएट होची। एर्गोटिज्म रे हमर सेई भलिया माने एर्गोटिज्म रे भी हमर सेई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जोड़ा आसे तो एडा सब आसीबो व्हिच डिजीजेस आर कॉज फ्रॉम टेकिंग दिस काइंड ऑफ नॉन बैक्टेरियल फॉर्म ऑफ टॉक्सिकेशन जोटा बाहर माने बिना बैक्टेरिया रे जोटा इंटॉक्सिकेशन हुए फूड गुड़ा तो सेटा है डिजीज सब हुए एर्गोटिज्म हुए। आ गोटे है जोटा कहली क्लोरोसिस नहीं तो लिथारिज्म आर्जिमन टॉक्सिसिटी एटा सब डिजीज गुड़ा फूड पॉइजनिंग ऑफ नॉन बैक्टेरियल ओरिजिन रे एटा आसी एटा इंपोर्टेंट आदर गोटे लॉन्ग आंसर आसीबो आ शॉर्ट आंसर भी आसीबो। होल बुक पढ़ाई गला बहुत भलरे जो माने क्लास पूरा कंप्लीट करि नांती से मानको प्रॉब्लम हबो एग्जाम रे आंसर देला पई तेणु कर एते कष्ट रे हम माने सब क्लास नौचु क्लास इग्नू रे एते सुंदर अरेंज करूचंती बट तमे मानकर प्रेजेंस टा बहुत कम से बहीटा आपण मैंने निजे निजे घरे थरोली पढ़े डाउट्स बाहर करेंगे मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे तेबे जाइए एग्जाम रे सब आंसर दे पारे। आउ जो ईयर असाइनमेंट से ईयर लिखिले से 75% पॉसिबल क्वेश्चंस आपको मिल जाए सो दैट यू कैन अपियर इन एग्जाम है से ईयर जिते सब आमर असाइनमेंट्स होची यही क्वेश्चन पैटर्न हिसाब रे होची से क्वेश्चन से असाइनमेंट्स गुड़ा डिपोजिट कले से ईयर एग्जाम गुड़ा तुम सुविधा हे को टाइप पैटर्न क्वेश्चन आसूची बोली है। बहीटा बहुत सुंदर बही बहुत सुंदर स्टडी मेटेरियल्स बहुत इजी लैंग्वेज पूरा तो सेटा को बुझिया सहज किंतु जेतबेले आमे पढ़ौछु ताकू मु ओडिया इंग्लिश बोथ लैंग्वेज रे पढ़ै छु तो ताकि आपण फंडामेंटल क्लियर रहले आपण माने ए सब जिनसडा बुझी परिबे पूरा तो अधारू अधा पिला क्लास अटेंड कलेनी तो निजे निजे पढ़िबे आ पढ़ला परे डाउट्स आसला परे देखिबे जो जो विषय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सब डिस्कशंस करती से क्वेश्चंस गुड़ा मध्य आसीबो। डाइट मैनेजमेंट रहिला सेफ आउ फैमिली प्लानिंग्स रही सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है वैक्सीनेशंस इम्यूनाइजेशंस एजेंट्स ऑफ कंटामिनेशन बहुत सुंदर भाव से स्टेप बाय स्टेप करी लास्ट बेल को इंटॉक्सिकेशंस आउ इन्फ्लामेशन सॉरी फूड टॉक्सिकेशंस फूड इंटॉक्सिकेशंस गोटे रही फूड इन्फेक्शंस गोटे रही बहुत सुंदर है
तो यही सब जिनस जो मैंने भी क्लास सब मिस करिसेंती सेमाने टिके पढ़ला बेलू टिके प्रॉब्लम हबो तेणुक काइंडली क्लास अरेंज होची माने आपण माने सेई टाइम रे क्लास टाको पूरा माने जदि शुणी था भी ये सब जिनस गुड़ा आपणकर बुझी पारिथांते एते सुंदर बही एते सारा टॉपिक्स अच्छी तो एशियन रो फूड क्वालिटी मैम केमती कौन କଥା मैम बुक रो ऑथर गुड़ा टिके कहि दियंतु मोर बुक गुड़ा आसीनी एपर्यंत आमर इग्नोर आपण मारिले DNHE-2 ऑफलाइन ना ऑनलाइन बुक आपण अप्लाई करछंती ऑफलाइन ऑफलाइन आसने जदि सेटा आपण गूगल को जाइए DNHE-2 पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन मारदेले भी आसीଯିବ ହେଲା आसीगले बहीटा को चेष्टा करिवे थरोल माने पूरा एते सिंपल लैंग्वेज माने सबू कॉमन पीपल माने एटा आराम से बुझी पारिबे गोटे बाय गोटे पढ़िबे मु जेमति पढ़िली फूड टॉक्सिकेशन फूड इन्फेक्शंस कौन फूड इंटॉक्सिकेशन कौन हैला फूड इन्फेक्शंस कौन जेतेबेले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड रे कंटामिनेटेड हे के हमें खाइलु सेटा हला फूड इन्फेक्शन हला जेतेबेले इंटॉक्सिकेशन कौन जेतेबेले सेई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस सब से खाद्य रे छाड़िबे सेतेबेले ता कहते इंटॉक्सिकेशन जदि तमर पड़ला डिफरेंस बिटवीन फूड इन्फेक्शन फूड इंटॉक्सिकेशन तो दीटा जाक सेम नुहे है तो लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितेबाला आम कंज्यूम करुचु माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेंट इन फूड वी कंज्यूम्ड एज इन आवर फूड सेतबले आमर जो डिजीजेस गुड़ा देखा जाए सेटा हला फूड इन्फेक्शंस आ जितेबाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस इट एडेड विथ आवर फूड है व्हेन वी विल कंज्यूम्ड इन आवर फूड देन इट इज नोन एज फूड इंटॉक्सिकेशंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माने फूड इन्फेक्शन क्रिएट करती भाइरस बैक्टीरिया पैरासाइट्स है यही सब जिनसा करती तो फूड इंटॉक्सिकेशंस माने तार से जो इफेक्टिव माने जोड़ा कि इंटेस्टाइन को एफेक्ट करिवो हैला सेटा हला इंटॉक्सिकेशंस तो एटा गोटे रहिला आ गोटे फूड पॉइजनिंग हला कोन ना जेतेबेले फूड हैंडलर्स माने किछि गोटे एफेक्ट माने फूड को छुईथिबे कि हेल्दियर पर्सन तांकर हाथ रे खंडिया हेतिबो कि तार रनिंग नोज थिबो तार काश कफ होउथबो तो से फूड पॉइजनिंग देखा जाए तो प्रिवेंटिव मेथड रे लिखिबे हैंड हाइजीनिंग आउ तापरे एनवायरमेंटल सैनिटेशन है आउ रेगुलरी फूड हैंडल्स मानकर फूड हेल्थ चेकअप्स तार हेपाटाइटिस अच्छी कि नहीं कोल्ड एंड कफ अच्छी कि नहीं फीवर्स अलगा किसी एक्यूट डिजीज अच्छी कि नहीं तो यहीटा को आमको देखा पड़ो तो फूड हैंडलर्स माने जो माने रेडी टू ईट मीट जो माने भेंडर्स गुड़ा जो भेंडिंग जोन रे जो माने बिक्री कर तो पब्लिक माने पब्लिक हेल्थ रो जो डिपार्टमेंट अच्छी आमे तांको कहबा प्लीज इन्वेस्टिगेट दैट माने एरियाज जोठी के हमरो रेडी टू ईट मीट आउ से जो भेंडिंग जोन सब अच्छी है जोठी मीट स्लॉटर्स माने जोठी मांस काटुचन सेठी बेसी फूड पॉइजनिंग हुए है जो माने सब सालाड्स और गजामुग सब ओपनली सब र फूड्स गुड़ा बिक्री कर बहुत समय जाए र फूड को से काकुड़ी को काटिक रखी दौरान तो सेठी मध्य फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हुए है से जो बटुलिज्म ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हुए तो आपण मैंने यहाँ बुझिले कौन हम ना आपण मैंने आराम से लिखिपारे कि ये सब जिनस करवा कथा कौ टेम्परेचर रे फूड को स्टोर कले हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसबनी है तार डेंजर जोन सब कौन तो यहाँ सब प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ फूड पॉइजनिंग लिखिपारे क्लास जदि अटेंड करेंगे बही नथिले भी आपण मन गोटे आइडिया आसो कि कौनटा आधे अच्छी एक्चुअली आम कौनटा लिखिले आमको हम तापर यहाँ है हैंड हाइजीन तो यहाँ है पब्लिक डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन तो यू हैव टू राइट कौन करेंगे यू हैव टू अवेयर आवर एजुकेशनल हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशनल अवेयरनेस टू द कम्युनिटी कहीं फूड पॉइजनिंग होची तमें खाइबाटा घोड़े रख जोठी फूड स्टोरेज होची सेठी जमती रैट्स रहिबेनी मूषा हो माछी हो कि एनी ऑर्गेनिज्म फ्री पाई कि आमे ताकू सेफ्टी जोन रे रखिबा कारण सेइथरे ही तांकर से जो मूषा माछी से माने अलगा जगह आनिकी बा तांकर जो फिशेस हो तांकर यूरिन हो सेथि पाई कि मध्य हमर फूड पॉइजनिंग हे थाए तो एई सब पॉइंट्स गुडा सुनिथिले एडा सब लेखिया पे सुविधा है हैंड हाइजीन है एनवायरमेंटल सैनिटेशन आउ एर्गोटिज्म जितेबाला आम खाऊँ पैरालिसिस कंडीशंस आसूची
ତ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ନା ତାକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ତ ବ୍ଲାକ୍ର ଯେଉଁ ଏର୍ଗଟ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଆସିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶସ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ରଖିବାନି, ସୋ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ବାନରେ କେମିତି ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ବା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏଟା କେମିତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ହେଲା। ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, ରିଜର୍ଭିୟର ହେଲା, କୋଉଠି ସେଇଟା ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି ବେଶୀ ହେଲା, ତା ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ, ତାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ କ'ଣ, ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ପାରାସାଇଟ୍ସ ହେଲା। ବହିଟାକୁ ଆଉଥରେ ଥରୋଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିନା ପଢ଼େଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଡାଉଟ୍ସ ଆସିବ କି ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ହେଉଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ମି। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଯିବେ। ତ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ସେଇଠି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରନ୍ତିନି ନା ବହିଟାକୁ ଯଦି ଥରୋଲି ଗୋଟେ ଥର ସବୁ ବୁକ୍ଟା ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ବହି ଭିତରେ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏର୍ଗୋଟିଜମ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାର ଏର୍ଗୋଟିଜମ୍ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କି କୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମଟା ଦାୟୀ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଲିଥାରିଜମ୍ ପାଇଁ କି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ସିରିଏଲ୍ସଟା ଯେଉଁଟା କି ଆମର ଫଙ୍ଗସ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ସିରିଏଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲିଥାରିଜମ୍ ବା ପାରାଲିସିସ୍ କରୁଛି। ତ ଖେସରୀ ଡାଲ୍, ତ ଖେସରୀ ଡାଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫୁଡ୍ ଖେସରୀ ଡାଲ୍ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଖାଇବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିବାନି ଖେସରୀ ଡାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫୁଡ୍। ଆମର ଯେମିତି ଭାତଟା ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫୁଡ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କି ତମେ ଲିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କର। କ'ଣ କରିବ ନା ବଏଲିଂ ୱାଟରରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସୋକ୍ ଫର୍ 1 hour, ଦେନ୍ ଡିସ୍କାର୍ଡ ଦ ୱାଟର, ଦେନ୍ ରି ଅଗେନ୍ ଦ କୁକ୍ ଦ ଫୁଡ୍। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1 ଘଣ୍ଟା ବଏଲିଂ ୱାଟରରେ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିବା। ରଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ସଟା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଲିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲିଚ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ବା ବାହାରି ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଦେନ୍ ରି ଅଗେନ୍ କୁକ୍ କଲେ ଖେସାରୀ ଡାଲ୍ର ଯେଉଁ ପଏଜନେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲିଥାରିଜମ୍ କରୁଥିଲା ବା ପାରାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫୁଡ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବହିର ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ସ ଆସିବ। ତାପରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍। କାରଣ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ସର୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ବହି ପଢ଼ିଥିବେ ଲେଖିପାରିବେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ 3ଟା ଯାକ ବହିକୁ ଥରୋଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବହିର ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁନି, ସବୁର ପାର୍ଟସ୍ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ଡ ଅଛି। ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଏନିମିଆ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟର କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇଲେ ସେ ବଡ଼ି ଆବଜର୍ବ କରେନି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ସବୁ ଆସିଲା କେମିତି ଆମର ସେଫ୍ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେମିତି ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଆମର ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଉଛି, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। କାରଣ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମେ ମା ଛୁଆ ଯାହାକୁ ଭଲରେବଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତ ସେଇଟା ଆବଜର୍ଭ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ମାଲନରିଶ୍ ବା ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ବହିଟାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହାଇଲାଇଟରରେ ହାଇଲାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିବେନି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ମାଇ ନମ୍ବର ହେଲା। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେବେ। 720 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାମ୍। 720 533 533 10 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 720 722 533 ନାଇଁ 720 ହଁ 720 533 ହୁଁ 10 ହଁ 94। ହଁ ମ୍ୟାମ୍।
7205331094 ବହି ପୁରା ଥରୋଲି ପଢିବେ, ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ସ ଆସିବ ଆପଣ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ପଚାରିଲେ କଣ, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ଏତେ ଭଲ, ଯଦି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ବା ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ଯୋଉଠିକୁ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଗାଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହିଟା ପୁରା ଦରକାର, 1 2 3 ତିନିଟା ଯାକ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋର୍ସଟା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବହି ବିଷୟରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଯଦି ପୁରାଟି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ବହିଟାକୁ କିନ୍ତୁ ପଢିବେ, ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ରିଡିଂ ମାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢିବେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ, ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଆଉ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ରିସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାମ୍। क्वेश्चन को ये होती जो डिसेंबर एप्रिल जो जो ये आपण सेशन रे एग्जाम देबे सेही असाइनमेंट सडा देखिबे, प्लस बही थरोली पढिबे, हेले जानि जिवे पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस केमते आसीबो। थैंक यू।